ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथानुतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Yes. Can we start, Prabhuji? Yes, Prabhuji. Yeah, when a person. Yes. You read, Prabhuji, please. Okay, Prabhuji. When a person is situated on the practical level of spiritual realization, it should be understood he is actually situated in yoga. It is not that one should continue to attend yoga classes and yet remain the same throughout the life, throughout his life. There must be practical realization. And what is the sign of practical realization? The mind will be calm and quiet and no longer agitated by attraction of material world. The self-control. One is not attracted by material glitter and he sees everything, pebbles, stones, or gold, as the same. In the material civilization, so much paraphernalia is produced just to satisfy the senses. These things are produced under the banner of material advancement. He who is situated in yoga sees such paraphernalia as just so much rubbish in the street. Moreover, Suhan Mitrari Udasina Madhyastha Devyasya Bandhusu Sadhusva Api Cha Papeshu Sama Buddhir Vishishyate. A person is said to be still further advanced when he regards all the honest well-wisher, friends and enemies, the envious, the pious, the sinner, and those who are indifferent and impartial. Bhagavad-Gita with an equal mind. Bhagavad-Gita 6.9. There are different kinds of friends. There is Surat, who is by nature a well-wisher and is always desiring one's welfare. Mitra refers to an ordinary friend, and Udasina is one who is neutral. In this material world, someone may be my well-wisher, friend, or neither friend nor enemy but neutral. Someone else may serve as a mediator between me and my enemies, and in this verse he is called Madhyastha. One may also see someone as pious and another as sinful according to his own calculations. But when he is situated in transcendence, all of these friends, enemies, or whatever cease to exist. When one becomes actually learned, he does not see any enemy or any friend because in actuality, no one is my enemy, no one is my friend, no one is my father, no one is my mother, etc. We are all simply living entities playing on a stage in a dress of father, mother, children, friend, enemy, sinner, and saint, etc. It is like a great drama with so many characters playing their parts. However, on the stage, a person may be an enemy or whatever, but off the stage, all the designations to one another. I may be thinking, this is my son, but in actuality, I cannot beg it any son. It is not possible. At that most, I can only beg at a body. It is not within any man's power to beg at a living entity. Merely by sexual intercourse, a living entity cannot be begotten. Living entity must be placed in the emulsification of secretions. This is the verdict of Srimad Bhagavatam. Thus, all the multifarious relationships between bodies are just so much stage play. One who is actually realized and has actually attained yoga no longer sees these bodily distinctions.
Yes, Prabhuji. Next chapter. Yes, the fate of the unsuccessful yogi. It is not the it is not that Bhagavad Gita rejects the meditational yoga process. It recognizes it as a bona fide method, but it further indicates that it is not possible in this age. Thus, the subject in the sixth chapter of Bhagavad Gita is quickly dropped by Sri Krishna and Arjuna. Arjuna next asks, Ayati Shraddhayopato Yoga Chalita Manasa Aprapya Yoga Samsiddhim Kam Gatim Krishna Gacchati. What is the destination of the man of faith who does not preserve, who is the beginning takes to the process of self-realization but who later desists due to mindedness and thus does not attain perfection in mysticism? Bhagavad Gita 6.37. In other words, he is asking what becomes of the unsuccessful yogi or the person who attempts to perform yoga but somehow desists and does not succeed. It is something like a student who does not get his degree because he drops out of school. Elsewhere in the Gita, Sri Krishna points out to Arjuna that out of many men, few strive for perfection, and out of those who strive for perfection, only a few succeed. So Arjuna is inquiring after the vast number of failures. Even if a man has faith and strives for perfection in the yoga system, Arjuna points out that he may not attain this perfection due to worldly mindedness. Kachin Kachinno vyabhivarastas chinnabhram eva nashyati aprastishto mahabaho bimhula brahmanapati. O mighty armed Krishna, Arjuna continues, does not such a man being deviated from the path of transcendence perishes, perish like a river cloud with no position in any sphere? Bhagavad Gita 6.38. When a cloud is torn apart by the wind, it does not mend back together again. Uh, Maybe someone else can read because this is a long paragraph. Ishu Prabhu, can you start maybe? This is my doubt. From here or from the shloka? एवं From में the सुना shloka. क्या? एतान में संशयम कृष्ण एताम में संशयम कृष्ण एतम आश्रय अशस्ता अस्यता तद अन्वय संशयस्य चेता न हया उपेदते उपपादते. This is my doubt, O Krishna, and I ask you to dispel it completely. But for yourself, no one is to be found who can destroy this doubt. Bhagavad Gita 6.39. Arjuna is asking this question about the fate of the unsuccessful yogi so that in the future people will not be discouraged. By a yogi, Arjuna is referring to the Hatha Yoga, Jnana Yoga, and Bhakti Yoga. It is not that the meditation is only the form of yoga. The meditator, the philosopher, and the devotee are all to be considered yogis. Arjuna is questioning for all those who are attempting to become successful transcendentalists, and how so does Sri Krishna answer him. Sri Bhagavane Vacha Partha Neva Damutraha Vinashaha Tasya Vidayate Nahi Kalyanam Karat Kasyati Durgatim Tad Gashati. Here as in my many other places throughout the Gita, Sri Krishna is referred to as a Bhagavan. This is another of the Lord's innumerable names. Bhagavad Gita indicates that Krishna is the proprietor of 6 opulences. He possesses all beauty, all wealth, all power, all fame, all knowledge, and all renunciation. Living entities partake of these opulences in finite degrees. One should be famous in a family, in a town, in a country, or in one planet. But no one is famous throughout the creation as is Sri Krishna. The leaders of the world may be famous for a few years only. But Lord Sri Krishna appeared 5,000 years ago and being still worshipped.
So no one possesses all the six of these appearances in completeness is considered to be a god. So one who possesses all the six of these appearances in completeness is considered to be a god. In Bhagavad Gita, Krishna speaks to Arjuna as the supreme personality of Godhead. As a such, as such it is, and to be understood that he is complete knowledge. Bhagavad Gita was imparted to the sun god and to Arjuna by Krishna. But nowhere else it is mentioned that Bhagavad Gita was imparted to Krishna. Imparted to Krishna. Why? Complete knowledge means that he knows everything that is to be known. That is an attribute of God alone. Being that Krishna knows everything, Arjuna is putting this question to him about the fate of the unsuccessful yogi. There is no possibility for Krishna to research the truth. He simply has to receive the truth from the complete source, and this is the system of disciple succession. This disciplic, what is written this? Disciplic succession. Krishna is complete. Krishna is complete, and the knowledge that comes from the Krishna is also complete. If Arjuna receives this complete knowledge, and we receive it from Arjuna as it was spoken to him, then we will also receive. And what is this knowledge? The blessed Lord said, "Son of Partha, a transcendentalist engaged in auspicious activities does not meet with destruction either in this world or in the spiritual world. One who does good, my friend is never overcome by evil." Bhagavad Gita 6.40. However, Hare Krishna indicates that the very striving for yoga perfection is the most auspicious attempt. When one attempts something so auspicious, he will be never degraded. Hare Krishna. Shall I start? Yes, please. Actually, Arjuna is asking a very appropriate and intelligent question. It is not unusual for one to fall down from the platform of devotional service. Sometimes a neophyte devotee does not keep the rules and regulations. Sometimes he yields to intoxication or is trapped by some feminine attractions. These are impediments on the path of yoga perfection. But Sri Krishna gives an encouraging answer. For he tells Arjuna that even if one sincerely cultivates only 1% worth of spiritual knowledge, he will never fall down into the material whirlpool. That is due to the sincerity of his effort. It should always be understood that we are weak and that the material energy is very strong. To adopt a spiritual life is more or less to declare war against the material energy. The material energy is trying to entrap the conditioned soul as much as possible. And when the conditioned soul tries to get out of her clutches by spiritual advancement of knowledge, material nature becomes more stringent and vigorous in her efforts to test how much the aspiring spiritualist is sincere. Material energy or Maya will then offer more allurements. Anushka Mataji can start. Hare Krishna. In this regard, there is a story of Vishwamitra Muni, a great king, a Kshatriya, who renounced his kingdom and took to the yoga process in order to become more spiritually advanced. At that time, the medicinal yoga process was possible to execute. Vishwamitra Muni meditated so intently that Indra, the king of heaven, noticed him and thought, "This man is trying to occupy my post." The heavenly planets are also material and there is competition. No businessman wants another businessman to exceed him. Fearing that Vishwamitra Muni would actually depose him, Indra sent one heavenly society girl named Menka to allure him sexually. Menka was naturally very beautiful and she was intent on disrupting the Muni's meditations. Indeed, he became aware of her feminine presence upon hearing the sound of her bangles, and he immediately looked up from his meditation, saw her, became captivated by her beauty. As a result, the beautiful girl
Shakuntala was born by their conjugation. When Shakuntala was born, Vishwamitra lamented, "Oh, I was just trying to cultivate spiritual knowledge, and again I have been entrapped." He was about to flee when Menaka brought his beautiful daughter before him and chastised him. Despite her pleading, Vishwamitra resolved to leave anyway. Kanak Mataji may start. Hare Krishna, Alok Prabhu has also joined. Okay. Thus, there is every chance of failure on the yogic path. Even a great sage like Vishwamitra Muni can fall down due to material allurement. Although the Muni fell for the time being, he again resolved to go on with the yoga process. And this should be our resolve. Krishna informs us that such failure should not be cause for despair. There is a famous proverb that failure is the pillar of success. In the spiritual life, especially, failure is not discouraging. Krishna very clearly states that even if there is failure, there is no loss either in this world or in the next. One who takes to this auspicious line of spiritual culture is never completely vanquished. Hare Krishna. Now, what actually happens to the unsuccessful spiritualist, Sri Krishna specifically explains, Prape punya kartam lokam usitav saswat samaha suchim shrimatam gihi yoga bhrasato vijayata athava yoginam eva kule bhavati dhimatanam itadhi durlabhatram loke janam yat idrasam. The unsuccessful yogi, after many, many years of enjoyment on the planets of the pious living entities, is born into a family of righteous people or into a family of rich aristocracy, or he takes his birth in a family of transcendentalists who are surely great in wisdom. Verily, such a birth is rare in this world. Bhagavad-Gita 6.41 to 42. There are many planets in the universe, and on the higher planets, there are greater comforts. The duration of life is longer, and the inhabitants are more religious and godly. Since it is said that 6 months on earth is equal to 1 day on the higher planets, the unsuccessful yogi stays on these higher planets for many, many years. Vedic literatures describe their lifetime as lasting 10,000 years. So even if one is a failure, he is promoted to these higher planets. But one cannot remain there perpetually. When the fruits or the results of one pious activities expire, he has to return to earth. Yet, even upon returning to this planet, the unsuccessful yogi meets the fortunate circumstances, for he takes his birth in either a very rich family or a pious one. Hare Krishna. Yes. Generally, according to the law of karma, if one enacts pious deeds, he is rewarded in the next life by birth into a very aristocratic family, or into a very wealthy family, or he becomes a great scholar, or he is born very beautiful. In any case, those who sincerely begin spiritual life are guaranteed human birth in the next life. Not only the human birth, but birth into either a very pious or a very wealthy family. Thus, one with such a good birth should understand that his fortune is due to his previous pious activities and to the God's grace. These facilities are given by the Lord, who is always willing to give us the means to attain Him. Krishna simply wants to see that we are sincere. In the Srimad Bhagavatam, it is stated that every particular person has his own duty in life, regardless of his position, regardless of his society. If, however, he gives up his prescribed duty and somehow, either out of sentiment or association or craziness or whatever, takes shelter of Krishna, and if, due to his immaturity, he falls from the devotional path, still there is no loss for him. On the other hand, if a person executes his duties perfectly but does not approach God, then what does he earn? His life is indeed without benefit. But a person who has approached Krishna is better situated, even though he may fall down from the yogic platform. Krishna further indicates that of all good families to be born into, families of successful merchants or philosophers or meditators, the best is a family of yogis. One who takes birth in a very rich family may be misled. It is normal for a man who is given great riches to try to enjoy those riches.
Thus, rich man's sons often become drunkards or prostitute hunters. Similarly, one who takes birth in a pious family or in a Brahminical family, one becomes very puffed up and proud, thinking, I am Brahman, I am pious man. There is chance of degradation in both rich and pious families, but one who takes birth in a family of yogis or devotees or of devotees has a much better chance of cultivating again that spiritual life from which he has fallen. Krishna tells Arjuna, Tatra tam buddhi samyogam labhate paurabdehikam yatate chetato bhuya samsiddhim kurunandana. On taking such a birth, he again revives the divine consciousness of his previous life, and he tries to make further progress in order to achieve complete success, O son of Guru. Bhagavad-Gita 6.43. Being born in a family of those who execute yoga or devotional service, one remembers his spiritual activities executed in his previous life. Anyone who takes to Krishna consciousness seriously, he is not an ordinary person. He must he must have taken to the same process in his previous life. Why is this? Purva vinashya taneva hriyate ahe avyaso pisha sa. By the virtue of this divine consciousness of previous life, he automatically becomes attracted to the yogic principles even without seeking them. Bhagavad-Gita 6.44. In the material world, we have experienced that we do not from the one life to another. I have millions of dollars in the bank, but as soon as my body is finished, my bank balance is also at death. The bank balance does not go with me. It remains in the bank to be enjoyed by somebody else. This is not the case with spiritual culture. Even if one interacts a very small amount of the spiritual platform, he takes that with him to his next life, and he picks up from that point. Hare Krishna. When one picks up this knowledge that was interrupted, he should know that he should now finish the balance and complete the yogic process. One should not take the chance of finishing up the process in another birth, but should resolve to finish it in this life. We should be determined in this way. Somehow or other, in my last life, I did not finish my spiritual cultivation. Now Krishna has given me another opportunity. So let me finish it up in this life. Thus, after leaving this body, one will not again take birth in this material world, where birth, old age, disease, and death are omnipresent, but will return to Krishna. One who takes shelter under the lotus feet of Krishna sees this material world simply as a place of danger. For one who takes to spiritual culture, this material world is actually unfit. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati used to say, this place is not fit for a gentleman. Once one has approached Krishna and has attempted to make spiritual progress, Krishna, who is situated within the heart, begins to give directions. In the Gita, Sri Krishna says that for one who wants to remember him, he gives remembrance, and for one who wants to forget him, he allows him to forget. Yeah, I think 6th chapter is finished. I think we should start with a discussion. I can go maybe first. Yes, please. So, in this chapter, I would say the things that we studied today. So, Arjuna asked very interesting question. कि उस योगी का basically क्या होगा? Who has, who was actually not successful in the current life. तो उसका फिर क्या होगा नेक्स्ट बर्थ में? तो श्री कृष्ण फिर एक्सप्लेन करते हैं बहुत अच्छे से कि जो हम जितनी भी मटेरियल चीजें करते हैं वो तो हमारी यहीं पर ही सब रह जाती हैं, बट एक्चुअली जो भी हम योगा परफॉर्म करते हैं, जो भी डिवोशनल सर्विस करते हैं, वी कैरी दैट टू आवर नेक्स्ट लाइफ ऑल्सो. तो हायर प्लैनेट्स का भी बताया फिर कि हायर प्लैनेट्स में जो लाइफ होती है, मतलब यहाँ के जो 6 months होते हैं वो एक्चुअली वहाँ के 1 day होता है. तो ऐसे या तो ऐसे योगी को किसी हायर प्लैनेट्स में प्लेस मिल जाएगा, अदरवाइज नेक्स्ट लाइफ में भी उस हायर प्लैनेट से भी एक्चुअली उसे आना तो फिर भी ह्यूमन बर्थ तो लेना ही पड़ेगा आफ्टर मैनी ईयर्स.
यहाँ आने के बाद भी फिर उसे किसी रिच फैमिली में मिलेगा जो नेक्स्ट बर्थ होगा, या किसी ब्राह्मण फैमिली में मिलेगा, बट उसमें भी चांसेस होते हैं कि अगर ब्राह्मण या रिच फैमिली में भी मिलता है कि रिच फैमिली में द पर्सन में मिसलेड, और ब्राह्मण फैमिली में भी उसे प्राउड हो सकता है कि मैं तो ब्राह्मण हूँ। बट अगर किसी बेस्ट होता है, किसी योगी के घर में अगर जन्म मिल जाता है, डिवोटीज फैमिली में बेसिकली, तो उसमें फिर चांसेस होते हैं टू कल्टिवेट दी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट अगेन। तो वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। तो या दैट वाज माय अंडरस्टैंडिंग आफ्टर रीडिंग टुडेस चैप्टर्स। Thank you, Mataji. Can I share the through? Yes, Guruji. Thank you. Adding to what Mataji said, Prabhupada have also written that कि अगर मतलब if we are doing bhakti in this life and we मतलब हम अगर इस लाइफ में भक्ति कर रहे हैं तो it means मतलब बहुत हाई चांसेस है कि वो इंटरप्रेट भक्ति है ना, जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं इस लाइफ में। तो हमें कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वी कैन टेक इट टू नेक्स्ट लाइफ और फर्दर। अभी हमें ये लाइफ मिली है ना, तो अभी हमें यही सोचना चाहिए, हमारा गोल मस्ट बी दिस ओनली कि हमें ये जो भक्ति है, इसका जो प्रोसेस है, ये इसी लाइफ में ही हमें कंप्लीट करना है ना। हमें किसी भी ऐसी मुंडेन एक्टिविटीज में नहीं पड़ना है कि जिससे ये चीज हमें दोबारा नेक्स्ट बर्थ कैरी करनी पड़े। और इसमें प्रभुपाद बताएं कि कि अगर जैसे भगवान ने अगर हम भगवान को भूलना चाहते हैं तो भगवान ने फॉरगेटफुलनेस दी है। अगर हम भगवान को याद करना चाहते हैं तो भगवान रिमेम्बरेंस भी देते हैं। तो अगर हम भगवान को याद करना चाहते हैं तो भगवान जैसे कि हमारे हृदय में ही है, तो वो खुद ही हमें गाइड करते हैं हमारे लिए क्या ठीक है और क्या गलत है। तो for the one who takes shelter under the lotus feet of Krishna, see this material world simply as a place of danger. So I think the person should be that much intelligent कि अगर हमें इस लाइफ में भक्ति करने का मतलब ये अवसर मिला है तो हम इसे इनकैश करें, और मतलब we can go eligible, we can become eligible to go back to Godhead। हमें इसे चीपली नहीं लेना चाहिए। Yes, Prabhuji, that's all from my side. मतलब पहले मेरा भी क्वेश्चन ये होता था जब भक्ति में आने के बाद कि कुछ लोग भक्ति में एकदम से आके चौके छक्के मारने लगते हैं, जस्ट थोड़ा सा उन्हें पता चलेगा और फिर देखेंगे इतना एक्टिव रहेंगे वो लोग कि बहुत ही कम एज में, और उनका डेडिकेशन भक्ति में, कीर्तन में, लेक्चर्स में बहुत ही ज्यादा होता था। तो लेटर ऑन भी सी कि भगवान इसका आंसर दिए हैं, जैसे भगवान कहते हैं कि भाई ये तो सब पुराना है, पूर्वाभ्यास है ना, तीन वे। मतलब ऐसे होता है ना, कोई क्रिकेट देख रहे हैं और कोई आया एकदम से चौके छक्के मारने लगा तो सोचा ये कैसे भाई, तो इसका मतलब उसने पहले से स्टेट लेवल पे खेला हुआ है या अच्छे से उसने कहीं बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है। तो वैसे ही भक्ति का भी है। तो वो पॉइंट काफी इंटरेस्टिंग है कि हम जो भी लोग भक्ति कर रहे हैं अपने अपने स्तर पे, तो एकदम जीरो से किसी ने शुरुआत नहीं किया, उसका थोड़ा सा तो मतलब सोलह माला कर रहे हैं और ये सब है, तो जीरो से शुरुआत होती तो शायद अभी थोड़ी बातचीत ही कर रहे थे वो सब, या वेल विशर ही बन पाते। तो हम सब ने बहुत अच्छे से पहले से भक्ति की हुई है, इसलिए अब यहाँ पे भी हम उस स्तर से शुरू कर रहे हैं। Okay, that's all. Yes, Deepak बोलिए। मैं बस मुझे एक एनालॉजी याद आ गई। जैसे बचपन में जैसे हम ट्यूशन लगाते थे ना, तो टीचर होता था हमारे, तो हमको बहुत मुश्किल लगता था, मतलब ऐसे किसी को कोई सब्जेक्ट टफ लगता था तो बहुत मुश्किल लगता था कि यार इसको कैसे समझें। तो सर को बोलते थे कि सर बहुत टफ है मेरे लिए, मैं कैसे करूँगा। तो यही अर्जुन ऐसे ही कर रहे हैं कि ये मतलब ये योगा करना बहुत टफ है, मतलब भक्ति योगा करना भी काफी टफ है, और अगर फेल हो गए तो क्या होगा। तो ऐसे ही बचपन में पूछते थे कि फेल होने का डर रहता था, तो टीचर बोलते थे कि बस इतना कर लो तुम पास हो जाओगे। तो ऐसे ही यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि तुमने अगर 1% भी सिंसियर एफर्ट डाला ना, तो तुम्हें दोबारा ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ तो नहीं मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। मतलब तुम्हें या फिर अच्छे या तो हायर लेवल पे, मतलब हायर प्लेनेट में जन्म मिल जाएगा, या फिर किसी ट्रांसेंडेंटलिस्ट या फिर किसी अच्छे जहाँ पे तुम्हें भक्ति करना दोबारा इजी होगा तुम्हारे लिए। तो इस तरह ये से पॉइंट है, एग्जैक्टली ये पॉइंट है कि इजी होगा। एक्चुअली उसमें उसकी भक्ति पूरी नहीं हुई है, इसका मतलब थोड़ा तो सेंस ग्रेटिफिकेशन बचा है। तो भगवान कहते हैं ठीक है, आई विल सेंड यू हायर प्लैनेट्स, यू कैन डू सेंस ग्रेटिफिकेशन,
And because you Yeah. have not completed your bhakti also, so after you will complete the sense gratification, you will be allowed to come back on earth. अब जब अर्थ पे आएगा तो उसे वैसा माहौल दिया जाएगा जिसमें भक्ति इजीली कर सके। तो या तो वो बहुत एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में होगा जहाँ पे Yeah. उसे मटेरियल लाइफ के लिए कि मुझे जॉब चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, उसके लिए उसे भागना नहीं पड़ेगा, तो वो ऑब्वियसली फिर स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ जा सकता है। या फिर वो ब्राह्मणिकल फैमिली में होगा जब वो लोग भी ज्यादा पैसे के पीछे भागते नहीं है, थोड़ा बहुत भिक्षा मांग के गुजारा कर लेते हैं और वो पहले से ही बहुत पायस रहते हैं, तो वहां पे उसे स्पिरिचुअल माहौल वैसा मिल जाएगा। जैसे भरत का हम देखते हैं, जब वो जड़ भरत बने थे तो उनको वैसे ही माहौल दिया गया फिर नेक्स्ट लाइफ में कि वो ब्राह्मण फैमिली में थे और सब उन्हें बराबर रिमेम्बरेंस था, वहीं से वो भक्ति करते रहे उस टाइप से। Yes, करेक्ट ना दीदी? Prabhuji. Thank you, Prabhuji. यस, थैंक यू। Who wants to go next? कनक माता जी। प्रभुजी मेरा एक क्वेश्चन है यस कि माता जी। अगर कोई इस्कॉन में रह के मतलब है अवेयर हो जाता है कि लाइक ये सब एक मटेरियल एंटेंगलमेंट है या मतलब हम लोग सफर कर रहे हैं, तो मतलब लाइक बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं, मुझसे ही करते हैं कि शादी क्यों करी फिर तुमने, या मतलब जैसे मेरे मदर इन लॉ है तो वही बोलते हैं बेबी तो करोगे ना, मतलब लेकिन फिर एक वो आता है माइंड में डाउट कि हम लोग मतलब ये सब करने से फिर अपनी मेंटेरियल एंटेंगलमेंट बढ़ती है तो हम ये क्यों करें, क्योंकि अगर कोई और ऐड ऑन होता है फिर फैमिली में फिर अटैचमेंट और ये सब एक लूप में फिर तो हम फंसते रहेंगे ना। अब हमें अवेयर हो रहा है इस चीज के बारे में तो एक मतलब मन बहुत परेशान होता है, पीछे हटता है कि क्यों करना है फिर ये सब चीजें। हाँ ये तो है, भागवत में भी हम सुने हैं कि भाई जो शरीर एक बार आ गया इसी को मेंटेन करना इतना दिक्कत है, अब इसको बढ़ाओ मत, इसको जितना शरीर को बढ़ाओगे उतनी मेंटेनेंस बढ़ेगी। बट फिर ये भी है कि अगर कुछ बॉडीली नीड है और अगर हम उसको पूरा नहीं कर रहे हैं ये सोच के कि चलो, जैसे फॉर एग्जांपल हम सोचे कि भाई रोजी रोटी क्यों कमानी है, और रोजी रोटी कमाने के लिए तो बहुत हार्ड वर्क है, बहुत मेंटेनेंस है, और सिर्फ रोटी तो खानी है तो चलो हम चोरी कर लेंगे, थोड़ा बहुत चोरी कर लिया और अपना पेट पाल लिया। तो पेट पालना अगर बेसिक नीड है तो उसको धर्म के हिसाब से ही करना पड़ेगा, अगर हम करेंगे तो और ज्यादा फंस जाएंगे पाप में और मटेरियल लूप में, और अंदर धंसते चले जाएंगे, जैसे बोलते हैं ना धंसना, जैसे दलदल में बोलते हैं, भगवान बोल रहे थे मटेरियल पूल में वो आदमी धंसता चला जाता है फिर अधर्म करने से। तो एक तो ये है कि भाई अगर अशुद्ध हो चुके हैं और थोड़ा सरेंडर का मूड है तो ठीक है, फिर उस तरफ नहीं जाने का। अगर डिजायर्स हैं तो अधर्म भी नहीं करने का। फिर भगवान ने धर्म का रास्ता बताया है कि ठीक है, आपको अगर बहुत खाना वाना खाने का ज्यादा इच्छा है तो आप प्रसाद खाओ, इस तरह से। अगर कुछ आप गृहस्थ है तो काम तो करना ही है, तो बोले कि आप अधर्म मत करो, आप धर्म के हिसाब से आगे बढ़ो, इससे आप प्योरीफाई हो जाओगे। तो चाहे गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी हो, सब प्योरिफिकेशन के प्रोसेस है सभी। तो पॉइंट एक्चुअली ये नहीं है कि बेबी करना है या नहीं करना है, पॉइंट है कि ऐसा ना हो कि हस्बैंड वाइफ वैसे साथ में रह सकते हैं, बेबी ना करें, बट अगर उनको अपनी लाइफ एंजॉय वैसे भी करनी है बॉडी लेवल पे तो फिर बच्चा जरूर करें, फिर अदरवाइज वो अधर्म और वो सब नहीं करना है। करेक्ट बात है, आपकी बात सही है। हम प्रभुपाद के काफी डिसाइपल भी ऐसे हैं जो बच्चा नहीं किए, हस्बैंड वाइफ साथ रहे पूरी जिंदगी और भगवान की सेवा करते रहे। एक्चुअली प्रभुपाद भी कोर्ट में लिखते हैं ना कि दैट कपल इज बेटर देन ब्रह्मचारी ऑल्सो, क्योंकि साथ में रह के भी उसको टेम्पटेशन नहीं आ रहा है तो कितना अच्छा बात है, बट टेम्पटेशन भी आ रहा है बच्चा भी नहीं कर रहा है, वो अधर्म हो गया, वो तो ब्लॉक करे भक्ति। वो तो तो फिर सिर्फ बोलते हैं कि क्वेश्चन हो गया प्रभु जी। हाँ, तो इसलिए बोलते हैं कि नहीं आप ठीक है साथ में हो तो धर्म के हिसाब से बच्चा करो एंड ग्रो दैट चाइल्ड एज ए कृष्णा कॉन्शियस। तो वो फिर आपकी कॉन्शियसनेस बोले इनफैक्ट अच्छी ही करेगा, एलिवेट ही करेगा ना उस सेंस में। यस यस ओके थैंक यू प्रभु जी। एक लेक्चर में भी मैंने सुना था कि इफ वी आर द हस्बैंड वाइफ दे वांट टू एक्सटेंड देयर फैमिली, तो उन्हें भगवान से भी प्रे करना चाहिए और मतलब फिर अपनी एक्टिविटीज भी वैसे रखनी चाहिए कि एक मतलब कोई भक्त ही आए, तो दैट वुड बी द, आई वुड से द, इफ यू वांट टू एक्सटेंड योर फैमिली तो वो एक अच्छा डिसीजन होता है कि हाँ वो उस तो है केस ही। में करदम मुनि तो बहुत 1000 साल तपस्या की है सिर्फ पत्नी के लिए,
कई बार ये भी लगता है, अरे कर्तव्य मुनि कैसे गृहस्थ थे बताओ, पत्नी के लिए पागल हुए जा रहे हैं। कैसे मुनि थे। कोई कह सकता है ना बाहर से कि कर्तव्य मुनि तो देखने में बड़ा ऐसा लगता है जैसे सेल्फ ग्रेटिफिकेशन का मूड है उनका, हजारों साल तपस्या कर रहे हैं और जब भगवान आए भी तो उनसे कह रहे हैं कि एक अच्छी सी पत्नी का थोड़ा देख लीजिए आप जरा। बोले अभी भी शुद्ध नहीं हुए क्या। तो सेवा वाला उनका मूड था। फिर कई साल, कई हजार सालों तक, हजार साल तो नहीं बट हाँ कई साल, कई सौ सालों तक तो बच्चा भी नहीं किए थे। फिर बाद में जब देवती बोली कि नहीं मुझे करना है, और वो प्लान भी था ब्रह्मा जी का, तो उन्हें करना भी था, ऐसा भी नहीं था। तब देन दे गेट इनटू फैमिली प्लानिंग कि नहीं चलो अब करते हैं करके। तो वही पॉइंट है कि हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए सब चीजों के लिए। तो प्योरिफिकेटरी प्रोसेस है तो धीरे धीरे उसमें आपको करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। ठीक, क्या होता है कि जब हम किसी करंट प्रोसेस में एंजॉय नहीं कर रहे होते हैं तब हम उसमें स्पिरिचुअल फिलोसफी लेके आते हैं कि नहीं क्यों करना है। समझ रहे हैं कि इसका मतलब क्या है कि हम उस प्रोसेस को भगवान की सर्विस नहीं देख रहे हैं, वहां प्रॉब्लम आ रही है। वो प्रॉब्लम किसी के साथ भी हो सकती है। मान लीजिए मंदिर में आपकी फूलों की सेवा है और आपको लग रहा है इसे क्यों करना है, ज्यादा से ज्यादा भक्त बनाने है तो मैं प्रचार में लग जाऊं, ऐसा नहीं है। जो भी काम है किसी भी तरह का वो सब भगवान की सर्विस से ही लिंक करके देखते हैं ना, तो फिर हम उसे एज ए सर्विस ही करते हैं। फिर कोई भी काम है, चाहे गृहस्थ का है चाहे ब्रह्मचारी का, दिक्कत तभी है जब हम उस काम को भगवान से जोड़ के नहीं देख रहे हैं, तब दिक्कत है। करेक्ट ना इशू प्रूफ? तो जी ये तो बेटर अंडरस्टैंडिंग आप ही की है। मेरे तो प्रयास रहता है कि अगर आप किसी भी आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं तो उससे पहले उसका पर्पस समझ लें कि चाहे वो गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थ हो या संन्यास हो, तो उसका जो मेन एसेंस है वो क्या है, वो पर्पस के साथ आप फॉलो अप करेंगे तो अच्छा ही निकलेगा। मतलब मतलब उसका पर्पस तो रिजल्ट सबका एक ही है, सततम विष्णु स्मरणम, सबका भी उसमें नहीं, एक मतलब ही कुछ है। स्पेसिफिक जैसे गोल वो हो बट गया हाउ टू डू इट, हाँ वो अचीवेबल। समझ लें कि हाउ टू डू इट इन हाँ दैट पर्टिकुलर आश्रम। हाँ, वो भी अंडरस्टैंडिंग। और ऐसा नहीं है कि हमें गुरु गुरु मतलब आप सरेंडर करेंगे तो ही विल टेल यू कि इतना डिफिकल्ट नहीं है उसे फाइंड करना, और शास्त्र भी हमारे हाँ बता रहे हैं उन चीजों को। तो या ऐसा हो जाता है कि अगर एक प्रॉपर गाइडेंस होती है तो दैट पाथ जो आश्रम आप लेते हैं तो वो भी फ्रूटफुल लेता ही है, चाहे फिर वो ब्रह्मचारी रहे आश्रम। या बाकी आप बता पाएंगे क्योंकि आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं उन सारी चीजों को। नहीं नहीं, तो आपको हाँ हमें इसी मेरा ये आश्रम में भेजना है इशू प्रूफ। अरे प्रभु। यू विल बी इन आवर और क्लब। यस प्रूफ। और एक लास्ट जो था क्विक एक्सपीरियंस, हम वैसे भी लेट चल यस रहे हैं, प्रूफ। मैं यस प्रूफ। एक एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा। अभी मैं परसों ही धौलपुर गया था, तो मैं ऐसे पर्सनल जो फील होता है मैं वो बताना चाह रहा था आपको। कल भी मैं इसी पॉइंट पे था, लेकिन मैंने कहा ये सही नहीं है क्योंकि आगे वाले चैप्टर में आएगा, तो मैं इससे रिलेट कर पा रहा था चैप्टर से कि वो वहां पे स्टेशन से बाहर हम निकले तो वहां पर के ना ऑक्स था जो मर गया था। गाय थी ऑक्स, पता आई डोंट नो क्या था, तो वो मर चुके थे वहां पे। और वहां पे ट्रॉली आई जो जानवरों को लेने आती है, नगर निगम वाले और ऐसे थे। तो उन्होंने उसे उठाया जैसे तैसे, मतलब एनी हु, मतलब विदाउट कंसिडरिंग एज अ एनिमल और क्या है, उन्होंने बस उठाना था, उनका काम था मतलब एक तरीके से। तो उन्होंने ऐसे कान में हुक लगाया और पैर में लगाया और ऐसे ट्रॉली से ट्रोल करके सीधे पटक दिया। तो उस ड्यूरेशन में पता नहीं मॉर्निंग थॉट कह लो या डिवोटीज एसोसिएशन कह लो कि मेरे अंदर है ना वो एक फील आता है, वो थॉट ऑफ मोमेंट होता है ना, मॉर्निंग थॉट कह लेते हैं उसे, कि वो मैं बता रहा था कि जो प्रभुपाद जी सेंस ऑफ नेसेसिटी की बात करते हैं ना, वो अर्जेंसी की बात करते हैं। तो वो मुझे फील हुआ उस चीज में, मतलब उस मोमेंट में कि यही है। मैं अपने आप को समझा रहा था इसी वक्त, यही है। दिस इज द ओनली टाइम जिस प्रभुपाद ने दिया है आपको ये ड्यूरेशन और ये एसोसिएशन दे रहे हैं। दैट इज द मोमेंट ट्रुथ एंड दैट इज द ट्रुथ अल्टीमेट, कि इसी लाइफ में आपको भक्ति मिले तो यू हैव टू डू इन दिस राइट ओनली। आप ये ऐसा नहीं समझें कि ऐसे लाइटली ले लें, या ऐसा कभी नहीं होता। घर पे दादी भी हैं, उन्हें भी देखते हैं, जो होते हुए अभी देख ही रहे हैं कितने परेशान हैं, और लोगों को जाते हुए भी देखते हैं शमशान घाट तक, लेकिन कभी फील नहीं हुआ वाला प्रोसेस अंदर से कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस लाइफ इज। लेकिन उस दिन मुझे ऐसा लगा दैट इज वेरी, अब मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ वर्ड्स में होगा, लेकिन दैट इज द मोमेंट दैट आई फील। हाँ, प्रभुपाद जिस नेसेसिटी की बात कर रहे हैं ना, प्रभुपाद क्यों इतना बार बार कह रहे हैं यू हैव टू थिंक एंड यू हैव टू, एटलीस्ट आपको रियलाइजेशन तो होना शुरू हो। आप पढ़ तो रहे हैं, लेकिन आप उसे स्पेकुलेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, जो प्रभुपाद बार बार कहने के लिए फोर्स कर रहे हैं हर चैप्टर में कि दिस इज। मैं ये कहूंगा कि हाँ, हम ये भी रियलाइज नहीं होता अगर हम प्रभुपाद की बुक्स नहीं पढ़ रहे होते, भगवत गीता नहीं पढ़ रहे होते,
या भगवतम नहीं सुन रहे होते और सीनियर डिवोटीज से नहीं सुन रहे होते. So this affect the association में association का कितना महत्व है. This is what I'm trying to convey कि continuous association कितनी necessary है. Yeah, this is all I want to share. No, thank you, Shubha. Yes, and Shubha Mataji left. हरे कृष्णा प्रभु जी. Hare Krishna. प्रभु जी, एक पॉइंट आएगा बीच में जो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि हमें हमेशा ये समझना चाहिए कि हम वीक हैं और माया बहुत स्ट्रांग है. जब हम अडॉप्ट करते हैं कभी भी स्पिरिचुअल लाइफ को, तो उसमें मतलब इट्स लाइक कि हम एक वॉर कर रहे हैं अगेंस्ट मटेरियल लाइफ, मतलब मटेरियल एनर्जी, जिसमें हम इतने ज़्यादा ट्रैप्ड हैं और हम ट्राई करते हैं वहां से निकलने का, लेकिन माया और ज़्यादा पावर से ट्राई करती है कि हम वहाँ पे ट्रैप्ड ही रहें. तो यही था प्रोजेक्ट. Amazing. बहुत अच्छा पॉइंट है ये भी. तो जी यहाँ मेरा एक और क्वेश्चन था कि माया देवी ऐसी चाहती है कि हम लोग ना कर पाए, या फिर एक्चुअली शी इज आल्सो सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, कृष्ण. शी इज आल्सो द डिवोटी ऑफ कृष्ण. तो एक डिवोटी और हम उनके मतलब पथ में हैं, तो हमारा बुरा क्यों, मतलब ऐसा. हाँ, उनकी सेवा है भगवान के प्रति, तो वो हमें ठोक बजा के भेजती है ऊपर. मतलब उनकी सेवा ये है कि ये व्यक्ति जो है ना यहाँ संसार में लगा हुआ है, इसकी ठुकाई पिटाई चालू रखो, ताकि एक जन्म में इसे रियलाइज होगा दैट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड. और जैसे ही इसे रियलाइज होगा तो इसकी थोड़ी और ज्यादा ठुकाई पिटाई करना. क्योंकि पहले नहीं माना था ये. इसलिए देखते हैं ना, भक्त लोग तो ज्यादातर पैसा नहीं होता भक्त के पास, ज्यादा गरीब से भी रहते हैं. वो एक श्राप के कारण भी है. और फिर वहां देखते हैं कई बार जैसे भक्त काउंसलिंग में भी नहीं है, तो कुछ भक्त तो छोड़ के भी चले जाते हैं. इतनी ठुकाई पिटाई भी होती है कि कुछ भक्त छोड़ के चले जाते हैं. उनको लगता है अरे जब से माला पकड़े बड़ा गड़बड़ चल रहा है मामला. बट पॉइंट इसकी छोड़ के आने के बाद भी उनकी मतलब उन्हें आना तो इधर ही पड़ता है, क्योंकि माया सर्विस में है, तो फिर से उन्हें दिखाती रहती है कुछ 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 कुछ, और फिर वापस आ जाते हैं वो. और जो कंटिन्यू करते रहते हैं इस बात पे, तो वो तो ग्लोरियस है ही, क्योंकि माया ने ऑलरेडी एग्जाम लेना शुरू कर दिया है. भगवान कई बार टेस्ट भी देते हैं, कभी छोड़ के ना चला जाए, बीच बीच में टेस्ट भी देंगे उसको ताकि रुका रहे. और फिर बीच बीच में फिर माया भी सर्विस में है भगवान की, तो वो भी लगाए रखती है कुछ, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ. फिर जब तक उसका फुल सरेंडर नहीं हो जाता. जैसे जीव का फुल सरेंडर हुआ, फिर माया का भी कृष्णा के पास मैसेज चला जाता है कि भैया इसका पूरा सरेंडर हो चुका है, पोर्ट ट्राई हो गया इसका, अब इसे आप वापस ले लीजिए. तो ऐसा है, इस टाइप से माया की सर्विस रहती है. तो माया ये नहीं चाहती दुखी हो, पर माया को फिर ये भी पता है कि अगर इसे सब सुखी 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 दिया जाएगा तो ये तो कभी माला करेगा नहीं. इस तरह से ये तो बड़ी मर्सी होती है भगवान की, कि भगवान की दुख मिल रहा है वरना हम ना करें कुछ भी. यस. हाँ, कल ही तो पढ़ रहे थे कि अगर मिजरी ना हो तो हैप्पीनेस का कैसे समझ सकते हैं. ओके, अमेजिंग डिस्कशन. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्रील प्रभुपाद की जय. जय. Thank you everyone. Hare Krishna. Thank you for joining. हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू. Krishna Prabhu, thank you.